हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बसेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंदर में 3.5 ऑडियो जैक पोर्ट के बारे में आज हम फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है लर्निंग एकेडमी 2.0 जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको जो प्रॉब्लम या कोई डाउट हुआ हो तो आप हमसे पर्सनली जुड़ के अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो जैक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। this is another one that is commonly seen everywhere but take note of the number of black strips on the connectors चलिए इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। ओके, तो ये हो गया। चलिए इसका 2 पॉइंट है वो हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है the one with two black strips is what we call a three people we call a three-pole connector। ये जो ऑडियो जैक पोर्ट है इसमें 2 ब्लैक स्ट्रिप्स आता है और इसमें 3 पोल कनेक्टर्स आता है। जो हम लोग हेडफोन यूज़ करते हैं उसमें देखिएगा, जो हम लोग मोबाइल में पोर्ट हम लोग इन करते हैं तो उसमें 3 पोल कनेक्टर्स आता है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। while the one with three strips is called a 4-pole connector।
जबकि जो इसमें स्ट्रिप्स रहता है, थ्री धारियाँ वाला में ओनली 4 ही पोल कनेक्टर इसमें कहा रहता है, मतलब 4 पोल कनेक्टर कहा जाता है। ठीक है, द रीजन, इसी में हम लोग हैं। ओके, the reason for that extra pole is to support an additional microphone on the earphone headphones। चलिए इसका हिंदी जानते हैं। इसमें उस आंतरिक पोल का कारण ईयरफोन हेडफोन एक आंतरिक माइक्रोफोन को भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे के पोर्ट के बारे में भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग फाइबर ऑप्टिक के बारे में भी जानते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी and light are two of the fastest things that we use transmit data but sadly copper wires are reaching the technical limitation for data transfer। चलिए इसका हिंदी हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, इसमें दो फास्टेस्ट मतलब तीव्र वस्तुएं हैं जिनका यूज हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। लेकिन ये दुख की बात है इसमें कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए तांबे का तार का प्रयोग हो रहा है इसमें। ठीक है, वायरलेस कॉपर का इसमें यूज होता है। ठीक है,
चलिए इसका सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। द न्यूअर जनरेशन of serious networking device are secured towards using fiber optic cables for ultra fast data transfer। सीरियस नेटवर्किंग डिवाइसेज जो है इसमें न्यूअर जनरेशन मतलब न्यू पीढ़ी को अल्ट्रा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का इसमें यूज़ करने की और इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए लाइटिंग के बारे में जानते हैं। तो आप लोग हमारा SST का जो जितना सब्जेक्ट हम लोग वीडियो अपलोड किए हैं, लाइव क्लासेस करवा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो ज़रूर वहाँ बताइए, या इंस्टाग्राम ID फॉलो करके वहाँ आप हमको बताइए कि आप लोग क्लासेस कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर बताएँ। ओके, चलिए अब हम लोग लाइटिंग के बारे में भी जान लेते हैं। Lighting is the latest generation iPhone, iPad, new generation of iPhone, iPad connectors and it is specific to Apple device only। चलिए इसकी हिंदी जानते हैं। लाइटिंग आईफोन और आईपैड कनेक्टर की ये न्यू जनरेशन है, लाइटिंग का है। ओके, और ये केवल एप्पल डिवाइस के लिए विशिष्ट है। ठीक है, स्पेसिफिक है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे पावर पोर्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये सब हम लोग बसेस एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के अंडर में ही हम लोग समझ रहे हैं। पावर पोर्ट्स क्या है इसके बारे में भी हम पहले जानते हैं। द पावर पोर्ट्स
of a computer commonly with computer commonly with the IEC standards, which is the same as almost all of our other household appliances. चलिए इसका हिंदी हम आप लोगों को बता देते हैं। कंप्यूटर का जो पावर कार्ड है जो IEC स्टैंडर्ड का ये पालन करता है, ठीक है, जो हमारे लगभग सभी हाउस होल्ड घरेलू उपकरण के ये सामान्य है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मली जो पावर कॉमन पावर प्लग होता है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है IEC 60320, ओके, C13 and C140। सेकंड है IEC 60320 C5 and C6। थर्ड पॉइंट हमारा IEC 60320 C7 and C8। ये 3 कॉमन पावर प्लग है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। हम जितना भी पावर पोर्ट है हम उसका फ़ोटो शॉट्स में हम बना के अपलोड कर देंगे, और इसका लिंक हम वीडियो में भी डाल देंगे और शॉर्ट्स में भी डाल देंगे, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है कुछ टॉपिक, तो हम लोग उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम ID फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।